with item has means what is actual thing is here that these problems are used to solve your complex problems. Okay, means these approaches are used to solve complex problems, and the teams also use this to solve their problems. Whatever the kind of problems normal organization or I can say a global like here we so आई कैन से दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है अगर उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है दे कैन यूज दिस थिंकिंग अप्रोच ओके एंड यूजिंग दिस थिंकिंग अप्रोच ये तीन हमारे पास इसमें फर्स्ट सब स्टेप्स है इन सब का यूज करके दे कैन ट्राई टू रिजॉल्व आउट देयर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम राइट these practices enable our teams to gain focus and alignment and ultimately to develop truly great product outcome fine means what we have actually here that ये जो प्रैक्टिस है अगर इन सब का यूज करके हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करें व्हाट वी कैन डू वी कैन मेनली फोकस ऑन आवर I can say on our product means on our solution that our solution whatever solution we are developing whatever the outcome we are developing it must be aligned and must be fruitful fine. Now, in practice, complex problems often call for complex teams, of course, and the complex teams can be challenged to manage. Of course, what we have to do, students, we always have to manage our problems. We don't have to do things like, हाँ जी आपके पास कोई बहुत बड़ा issue आ गया, so you can't. I can say that we have to just go away from the problem. So we have to manage. If we are in any kind of organization, तो हर particular problem को handle करना ही पड़ेगा, fine. The problem management frameworks can help manage complexity. We might divide team into squads or work streams or we might divide into sprints or phases. And in words का ध्यान रखना ये चारों divide our team into squads or I can say work streams or we can divide our teams into sprints or the phases also. So यहाँ सब आप लोगों को ये ध्यान रखें कि sprints क्या होते हैं, phases क्या होते हैं, fine. लोगों ने एक फेजेस के बारे में पढ़ा था अपने एज ए सिनेरियो में यहाँ पे वही हम उन्हीं फेजेस के बारे में पढ़ेंगे बट यहाँ पे जो फेजेस होंगे दैट विल बी पर्टिकुलर डिफरेंट थिंग ओके नाउ वी माइट इवन स्टैंडर्डाइज अराउंड द कॉमन प्रोसेस फॉर टीम्स टू फॉलो क्लियर no matter how we organize a team delivering great user outcome requires us to stay focused and aligned on what matters to users mean it is not effective ये नहीं है हमारे लिए कि आपकी टीम क्या है आपने किस से आपने टीम को डिवाइड किया है that is not the thing that we want okay what we want actually we want a fruitful output we want a fruitful outcome so that it will be effective for us okay now the keys are three important keys are techniques to diverse teams to reflect together as we move from idea to outcome okay so जो तीन चीज की बात की गई है यहाँ पे ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं अपने एक आइडिया से एक आउटकम पे मीन्स अपना जो भी प्रॉब्लम था उसको एक ट्राई करें कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए सो हम लोग एक आइडिया से आउटकम के थ्रू आउटकम के लिए मूव ऑन कर रहे हैं फाइन दे हेल्प अस टू गेट अलाइंड and stay in touch with real world needs even when we are deep in the work fine so though they have been onto our experience with our largest team we have found the keys to be invaluable for teams or of all size means whatever the size we have that doesn't reflect if we are working on a right track we will definitely get a outcome or I can say solution or result of our problem fine so let's continue with 3 points जो हम लोग 3 points के बारे में यहाँ पे देख रहे थे that is hills playbacks and sponsor users let's continue with that if I talk about hills see hills are statements of intent written as meaningful user outcomes means what are that hills क्या they are like a statement fine which must be meaningful means they should be meaningful related to the user outcomes they tell us where to go not how to get there empowering teams to explore breakthrough ideas without losing sight of the goal clear now हम लोगों ने कल जब डिस्कस किया था we are working with our just wait कल हम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर रहे थे इस सिनेरियो एंड नीड्स से भी रिजॉल्व की थी और
ऑर्गेनाइजेशन ग्रिड से हम लोगों ने और भी रिजॉल्व की थी शायद बिग आइडिया बिगनिटीज के थ्रू। सो जो प्रॉब्लम्स वहां पे आई थी उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए फर्दर हम लोगों ने आगे स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। जो भी हम प्रॉब्लम रिजॉल्व करते, लाइक हम लोगों ने कैब बुकिंग का किया था, हमने कोविड-19 के केसेस किए थे, ठीक है। आप में से किसी ने न्यू कैब बुकिंग के लिए किया था या फिर किसी ने उबर वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था। उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए फर्दर आगे आपके पास ये सारे पॉइंट्स हैं, फाइन। उन्हीं पॉइंट, जस्ट 1 सेकंड, लेट मी गो बैक टू द पॉइंट। या उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास फर्दर ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के स्टेप्स हैं। क्लियर? नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट हिल्स, सो लेट्स कंटिन्यू है। नाउ आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे इनवर्ड से कि हिल्स होते क्या हैं, ठीक है। नाउ हियर वी आर, by making these goals explicit and evaluating regularly, we align teams around a single shared mission. Means हमारे पास होता है क्या है कि हमारा मिशन तो एक ही है, नॉर्मल वी आर जस्ट अलाइन in a different groups to overcome the single problem or to achieve a single target or to a single mission. Okay, so we have 3 hills, 1 foundation. Let's see what is this. You can do anything but you can't do everything. Okay, hills should reflect an investment in the most valuable outcomes for the users and most important differentiators for the organization. So एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, बिकॉज कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उन क्वेश्चंस को पहले आंसर करो, ओके, देन द नॉर्मल क्वेश्चन, जस्ट वेट। एक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ, once you will try to resolve them you will continue, you are able to continue further, otherwise ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आई कैन से कंफ्यूजिंग लगेगा।